हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा सिविल्स। आज पीआई की सीरीज जोटा कि आम प्रीवियसली करूले वर्तमान जोटा कि प्रिलिम्स पाखे आसलानी वर्तमान विल गो फॉर द योर प्रिलिम्स स्पेसिफिकली विल गो फॉर द योर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड बिल्कुल विल हैव एन अप्रोच सीरियस अप्रोच नबा एंड केमती सॉल्यूशंस हम बिकॉज एनवायरनमेंट जदि आम देखा कि एनवायरनमेंट रो एमसीक्यूज कले कौन टा हमर फायदा हो प्रथम जिनसे डिस्कस जब हम करियो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स कौन आम पाइबा देखो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने द्वारा और खास करी जदि मु कहबी कि तुमर बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग शार्पेन हो इनफैक्ट इट इज एन एमलगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जोटा कि टिके हाई लेवल रहबो टिके मेडियोकर रहबो टिके इजी भी रहबो एनवायरनमेंट जदि देखिबा कि इट्स एन बहुत ही इंपोर्टेंट जब देखिए हमें जब पॉइंट ऑफ व्यू देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट हैज अ वेरी तार रोल बहुत डे बाय डे प्रीलिम्स 100 क्वेश्चंस मिनिमम 12 आछी बेले बेले 15टा भी पळे आछी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जब तुम देखो नियर अबाउट 40 35 टू 40 क्वेश्चंस अछि ता भीतर एनवायरनमेंट रो बहुत अधिका पार्ट रो तार जदि हम देखिबा कि इट्स एन गॉट वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो ये जो इथे हमें कवर करबा इथे देखो जहां तुम पढ़िलो ठीक अछि पढ़िबा संगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करले हमको बहुत जगह माने क्लैरिटी रहे एंड क्लैरिटी संगे से अनुसार हमको एग्जाम रे बढ़िया योर अंडरस्टैंडिंग हमर बढ़ा और एग्जाम हॉल रे कॉन्फिडेंस लेवल टाको मेन हाई करे मेन हला कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम हॉल रे हला वन बाय वन आज करबा एनवायरनमेंट सीरीज सेमते एनवायरनमेंट संगे प्रीवियसली एनवायरनमेंट संगे ज्योग्राफी भी मु नेबी ज्योग्राफी भी करबा एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करबा दैट विल डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल राइट सो वन बाय वन देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिबा which of the which is the smallest wildlife देखो which is the smallest wildlife sanctuary in the west bengal रे जदि हम देखिबा कि there are lots of wildlife sanctuaries ता भितर सब छोट किए नंबर सब दीदीटा क्वेश्चंस पर हम डिक्लेयर करछु सब दीदीटा क्वेश्चंस पर आमे तारा आंसर डिस्कस करबा राइट प्रथम देखिबा कि जेमती योर पाखी बितन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जदि देखिबो कि लोथिहान योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ भितर किए व्हिच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जदि देखिबा आंसर एनीवन कैन गिव राइट आंसर जदि हम देखिबा इटी आंसर इज योर जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सब क्वेश्चन रो हम दीदीटा कला पर तार एनालिसिस एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करें एक्सप्लेनेशंस करले हमको आउरी क्लैरिटी रहइबो ओके जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि तमरो वेस्ट बेंगल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट रे अछि ओके दार्जिलिंग रे बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट देखिबा हमें बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑप्शन कौन दी एबीसीडी रो ऑप्शन दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड then your biological oxidation demand then your biochemical oxidation your oxygen demand then biotic oxidation demand which one आ भितर BOD stands for जदि हम देखिबा it is your biological हला बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जदि हम देखिबा कि ऑक्सीजन डिमांड BOD हला केबे भी एटा हबनी जदि हम देखिबा कि योर बायोकेमिकल के बायो ऑक्सीडेशन डिमांड हबनी ओके बायोलॉजिकल योर ऑक्सीजन डिमांड नेक्स्ट देखिबा हमरा आंसर ठीक अछि कि एटी टिके मु रिवैम्प करिया को करबी दिस इज जदि हम देखिबा कि एटी यार भीतर आंसर्स भीतर नीदर ए नीदर बी नीदर डी इट इज योर बायोकेमिकल ऑक्सीजन योर oxygen demand now the question is that why it is biochemical because of your chemical reactions okay because of the chemical reaction of nutrients basically hela with nutrients ठीक अछि it is nutrients आंसर देखिबा तार वन बाय वन प्रथम जदि हम देखिबा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमती हुए बीओडी मींस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड फॉर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओके डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ठीक अछि मन देखि सुनो इतरे आई वुड सजेस्ट जो माने पढुछो खाता पेन धरिक बस सो दैट यू कैन हैव आंसर्स ब्रॉट आउट भी दे पारि ठीक अछि इट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन पुनी डिजॉल्व केमती हला डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू डिकंपोज ऑर्गेनिक मैटर हला डिकंपोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर सर्विंग एज a key indicator of the pollution okay जोटा कि key indicator of the pollutions
देखिए हायर बीओडी लेवल्स इंडिकेट जदि हम देखिबा कि हायर बीओडी लेवल्स ओके दैट इंडिकेट ग्रेटर कंटामिनेशन एंड लोअर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिते अधिक तुम देखिबो बीओडी लेवल बायोकेमिकल ऑक्सीजन जदि तुम देखिबा कि ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी तो इथरे जिते अधिक तुम रहइबो तुम जानिबो पॉल्यूशन टा सेते ज्यादा अच्छी ठीक अच्छी एंड ऑफ कोर्स इट इज एन levels indicates higher pollutions and also and a higher potential harming the aquatic life जते मन रखो कि बीओडी जिते अधिक हबो aquatic life को सेते harmful हबो okay it is much harmful to the aquatic life and it is widely used for monitoring water quality and assessing sewage treatment efficiency actually जिनसे हुए कौन है ना सीवेज वाटर जदि हमें देखिबा कि सीवेज ट्रीटमेंट एफिशिएंसी और वाटर क्वालिटी ओके वाटर क्वालिटी को बीओडी कौन करे नॉर्मली ओके बायोकेमिकल ऑक्सीजन वाटर क्वालिटी को इट रिड्यूसेस द वाटर क्वालिटी हैला ऊपरटा बेसिक किछ नै खाली दार्जिलिंग से मो डायरेक्ट अटैक डायरेक्ट आई स्विच ओवर टू योर सेकंड पार्ट माने बायोकेमिकल तो वाटर क्वालिटी केमती रहइबो एक्चुअली कौन हुए कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट व्हेन इट वाटर डिस्चार्जेस माने आई मीन योर केमिकल्स डिस्चार्ज टू द वाटर इट नॉर्मली ऑक्सीजन रे लेवल जो वाटर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ताको मिनिमाइज करनी so that it harm to the aquatic life also and that is what the water quality drastically reduces okay it is drastically reduces lower dissolved oxygen and higher potential for the harming of the aquatic life so देखा जाए कि जितने ई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट गुडा मोस्टली पाखरे गोटे पोखरी थिबो कि नदी थिबो कि एनी लेक थिबो जदी जाए इनफैक्ट ए स्मॉल पॉन्ड आल्सो से भीतर जो भी तुमर मेराइन माने एक्वाटिक एनिमल्स जो माने थिबे एक्वाटिक एनिमल्स की पाखरे मेराइन भी कि रिवर फ्रेश वाटर जहां भी maximum संग्रह eventually death occurs way so that is what how it is harmful over beauty right next देखिबा पूर्व क्वेश्चन हम कहबी कि स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके जदि हम देखिबा कि एटा हम डिस्कस करले कि जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच इज लोकेटेड इन इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल आउ जदि देखिबा इट इज लोकेटेड इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ओके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हम देखि छन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट रे कवरिंग ए वेरी स्मॉल एरिया okay it covers a very small area okay primarily established कौन पे इतना यार जदि हमें देखिबो कि जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी primarily established for your Himalayan your salmander Himalayan salmander जो जानी कि very interesting it is basically गोटे छोटिया झिटिपिटी टाइप इट्स बेसिकली एन एम्फीबियन छोटिया झिटिपिटी माने लिजर्ड हमले है ना झिटिपिटी टाइप देखिया पे बेसिकली इटा ताकू रिकवर करिया पे जोटा कि हिमालयस एरिया रे मेनली इट इज ले देखा जाय सेठी और द हिमालयन नेटवर्क व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1964 जोटा कि 1964 रे डिस्कवर्ड हेतला सालमेंदा द एम्फीबियंस टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय लिजर्ड लाइक अपीयरेंस ओके ए माने प्राय तो गोटे लिजर्ड टाइप रे देखा जाती लिजर्ड लाइक अपीयरेंस झिटपिट टाइप रो राइट सो सालमेंदर मन रखिथिबो हिमालयन सालमेंदर इट्स जस्ट लाइक एन you know lizard basically it's an lizard appearance गोटे झिटिपिटी टाइप रो देखिया पे one kind of next question दिबा which of the following weeds has been found हैला भला पर क्वेश्चन देखा अभी पार्टिसिपेट आंसर दे परियो which of the following weeds हैला has been found useful to check water pollution caused by the industrial effluent की number 1 water has your hyacinth हैला how you pronounce it water hyacinth then your elephant grass then third parentheum and एटी टिके छाड़ी जाय I'm sorry this is both A and B just state it as हैला आंसर so आंसर कोन हबो बोले लिखली both A and B parentheum then elephant grass and water hyacinth anyone can answer जदि हमें देखिबा the answer is your A रहिबो water hyacinth ठीक अछि it is neither B C D हबनी it is your water hyacinth okay आप हम डिस्कस करे काहे कि कहतले after every two questions we will discuss the answers with explanations okay next good statement based question धीरे धीरे हमें बॉडी बात को what are the following statements are correct regarding the algal boom सेम दिन आसीगला algal boom ऊपर कोन देखबा your correct regarding your algal boom it refers to a rapid increase or accumulation in the population algal boom देखो it is a refer to the rapid increase or accumulation of population of algae in an aquatic ecosystem
first statement. Second, algal bloom can occur in fresh water as well as marine environment. Hela, fresh water as well as marine environment. Answer kon hobo? Only A, only 2, then both 1 and 2. Answer kon rahebo? Hela, only 1, only 2, both 1 and 2 habit. Like algal bloom, same jinso, jota ki first statement is absolutely correct because you know rapid increase accumulation of the population of algae. Algal bloom ru mane kon algae ta boom hoichi. Hela, eithru hi jana padchi. So first statement is correct. Then algal bloom is can occur freshwater as well as the marine environment water. Absolutely correct. ठीक अछि, दुईटा जंकर हेई परिबा and of course we have seen it. ठीक अछि, so answer is your, तो देखियो both are correct, so answer is your C. ठीक अछि, answer is your C. एठी हला आंसर तमरो A. This is your answer is your A. अच्छा ता पूर्वटा मु जदी कहबी पूर्व आंसर गुडा करबे एठी तुम लिखि दिछु त यस एठी मु लिखि दिछु आंसर एठी हला B आउ एठी हला तमरो C. अच्छा वर्तमान हमें डिस्कस करबा आगु जिबा वाटर हाइसिन जदी देखिबो वाटर हाइसिन कोन water hyacinth is a free floating perennial aquatic plant basically it's a free floating जो perennial plant जोटा कि देखियो दଳ गाडियार प्राय माने देखा जान हैला मागु डिस्कस करछि और द हाइड्रोफाइट native to the tropical and subtropical of your South America mainly it is native to the South America basically okay South America native eta and जदी तमे देखिबो कि याको लोकली भी बेंगल टेरर भी कहा जाए बहुत रैपिडली इटा बहुत बढ़े एंड ऑफ कोर्स इट्स एन इनवेसिव स्पीसीज प्लीज रिमेंबर इट्स एन इनवेसिव स्पीसीज राइट सो विथ ए ब्रॉड थिक ग्लॉसी ओवेट लीव्स वाटर hyacinth may rise up to a surface of water as much as maximum 1 meter above say 3 feet above jai pare and also it is known as the terror bengal due to its invasive growth tendencies one rakho jodi questions asibo water hyacinth it is basically a invasive मन रख इट इज एन इनवेसिव स्पीसीज जोटी छाडी देबो ये सेठी कोन करियो माडी जीवो दळ गाडियर जंती माडी जाय एंती पडी जीवो रिमेंबर दिस वन इनवेसिव स्पीसीज सब सुनिथिबो एटा एंड आर जदी ओरिजिन देखो इट इज इन द साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ऑफ साउथ अमेरिका देखा जाय खास करके ब्राजील हो कि कोलंबिया हो एई जगह रे मेन लेटा देखा जाय एटा माडी जाय पर इट्स बर्तमान आकु कोन कहै छै दळ गाडियर आकु कहै छै कि टेरर ऑफ बंगाल हला रिमेंबर दिस क्वेश्चन बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि it has having some significance invasive species always in a hot cake next ता पूर्व आंसर कोन थिला algal bloom ऊपर त हम देखले दीटा तार एक्सप्लेनेशन देखबा algal bloom ऊपर कि algal bloom are rapid accumulations of algae in fresh water हैला rapid accumulation of algae in the fresh water definitely fresh water marine ecosystem and often triggered by nutrient pollution हैला it is often triggered by your nutrient pollution की थाए that is your nitrogen right nitrogen and phosphorus basically dita jinस थाए nitrogen and phosphorus one second ठीक अछि nitrogen और phosphorus basically तमर इथरे थाए nitrogen और phosphorus and warm water so algal bloom कोथरे में nitrogen phosphorus रो जदी कंटेंट तमर अधिका थिबो ताले रहइबो algal bloom plus your warm water भी तरह करे these blooms which can appear green red or brown है ना green red or brown can be toxic to humans ए जो algal bloom कोन हुए खाली जदी human को toxic हुए animals को also है ना and also overall aquatic ecosystem human and animals and depletion of कोन हुए आउ कोन करे oxygen deplete हो जाए basically depletion of oxygen is there and also damage to ecosystem हम ecosystem को इटा damage करे heavily damage करे so algal bloom is not good for your our ecosystem मन रखो ठीक अछि human हो animal हो समस्त को इटा तमरो mainly इटा it causes harm and basically highly it is toxic right next देखिए which of the following are the hello stay with me this is very important to discuss hello which of the following are the sources of methane emission pai kiye mane sources who are the sources the wetlands the raising of livestock then the treatment of wastewater तीनटा चॉइस देला कोन कोन फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ मीथेन एमिशन हैला समस्त भाग नै परिबो वेटलैंड हो आउ गुटी हो रेजिंग ऑफ द लाइवस्टॉक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर करेक्ट ऑप्शंस कोन दिस ऑप्शंस आ भितर ओनली वन माने खाली वेटलैंड
only 2 3 that means treatment of wastewater and raising of livestock माने जो माने जो गोरु गाईंकर जो माने जोठी तमरा एनिमल्स माने जोठी शेल्टर तंकर हैला से मानकर एक्सक्रीटा और यूरिन के सही जिंस को बुझो जेटा 1 3 ओनली ओके एंड ऑल आ भितरु आंसर कोन रहबो एबीसीडी भितरु जो माने करूचो से माने यू कैन पिंग इन योर कमेंट बॉक्स आल्सो सो दैट इट टू बी जते इंटरैक्टिव रहइबो खाली देख हला देखिया संगे भी करले तुमको और भी बेटर रहइबो आ भितर आंसर जदी देखिबो कोन हला तीनटा जांक विल गो फॉर द डी आंसर इट्स नॉट एबीसी सो आंसर इज डी काहे ना मीथेन गोटे इमिशंस बेसिकली तमे देखिबो धान हो कि मुग हो कि गहम हो जहां भी हो whether it is food crops or the pulses basically से माने हला cereals और pulses जहां भी तमे करो जेतले से माने तांकर रेजिड्यू रही जे ता भितर जेतले से माने पचे सड़े ता भितर तमर मीथेन गैस इमिट हुए राइट and also the livestock mananko animal tankar cattle shed ru and also treatment of the wastewater so answer is D for Delhi 6 number देखिबा आंसर counter bonding is a method of soil conservation in desert margins liable to strong wind action low flat plains close to the stream courses liable to flooding then scrubland liable to spread of weed growth and none of the above answer kon rahibo counter bonding basically ki mate answer debo counter bonding jodi tame dekhibo it is answer is your hela it is your D for Delhi या भितर कोनोसी आंसर नो केमती तार मु एक्सप्लेनेशन देबी counter bonding basically a shelter that is to check the movement of air हला movement of air को check करिया पे देखिबा देख आगर मु counter bonding ता कहि दोछि counter bonding is basically is a soil conservation basically it's a process of soil conservation technique used primarily on sloping land or where gradient is high sloping land or the gradient is high mainly at hilly and undulating terrain हैला जोटी की हिली आ माने जोटी माने पहाड़िया जगह की undulating आबड़ा खाबड़ा अछि जोटी की पवन रो the flow of wind is very high सेही जगह रे ही तमर काउंटर बॉन्डिंग ता बेसिकली करा जाय हैला ठीक अछि अच्छा देखिबा आगु को बेसिकली देखिबा जदी मीथेन इमिशन ठीक अछि माने एटा जदी देखिबे काउंटर बॉन्डिंग गोटे डायग्राम हिसाब रे कर दोछि काउंटर बॉन्डिंग बेसिकली तमे देखिबो यू विल फाइंड इन द हिली एरियाज लाइक कोठी नॉर्थ ईस्टर्न एग्जांपल को जगह रे देबी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स हैला नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स रे तमे देखिबो कोठी योर मेघालय रे देखिबो आसाम रे देखिबो हैला लाइक योर आसाम जोरहाट ठीक अछि मु देखिबी को जगह रे जोरहाट देन योर the Tejpur जोडी चा बागान रे हला चा बागान गुडा कर देखिबो then also you will find in the Meghalaya हला मेघालय रे भी तमे देखिबो मेघालय and also you will find in Meghalaya पर you will also find in your Sikkim also भी बहुत जगह many also in Mizoram Tripura सब जगह and खाली सेठी नो सेठी नॉर्थ ईस्ट पर भी हिली एरियाज देखनी इनफैक्ट तमे मध्य प्रदेश रे भी पाइबो कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो जगह हिली एरिया केरला आल्सो विल फाइंड द सेम आल्सो राइट पूर्वांचल देखिबा कि सोर्सेस ऑफ मीथेन इमिशन बेसिकली मीथेन इमिशन कोडी जाय मीथेन इमिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम द बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन ड्रिवन ठीक अछि ओके ठीक अछि इज इट ओके राइट ओके जदि हमें देखिबा कि मीथेन इमिशन ओरिजिनेट फ्रॉम द नेचुरल एंड ह्यूमन ड्रिवन दिटा जंग ओके just 1 second
ओके सो आगु बढ़िबा को जगह रे एंथ्रोपोजेनेटिक जदि हम देखिबा कि नेचुरल एंड ह्यूमन अच्छा एटी am I audible properly let me know I mean is it audible methane emission originate from the natural and the human दीटा जाकरू तमरा natural भी हुए आउ anthropogenetic जोटा कि लिखिछि anthropogenetic sources माने human source रो okay with anthropogenetic activities accounting for roughly जदि हम देखिबा कि anthropogenetic रो भागटा बेसी it is roughly around 60% of the total emission जते भी total emission अछि ता भितर roughly total 60% the primary sources are agriculture livestock basically की जीवो agriculture livestock and rice cultivation हैला agriculture livestock and the rice cultivations the fossil fuel sector आउ की जीवो the fossil fuel sector भी जीवो like की fossil fuels रे leaks coal mining हैला leaks जीवो coal mining and organic waste decomposition in the landfills so basically जदि तमे देखिबो कि हमरो methane emission टा बेसी mostly anthropogenetic हैला काहे ना human induced बेसी anthropogenetic माने we can say the human induced is much more human induced right human induced is more okay next which of the following can be found as a pollutants in the drinking water pollutants के in some part of the हमें देखियो यदि some parts of India के arsenic sorbitol fluoride formaldehyde uranium आ भितर की maximum जदि हमें देखिबा अंका भितरु कि can be found as the pollutants in the drinking water some parts of India आंसर देखिबा कौन arsenic भी अछि sorbitol अछि fluoride भी अछि formaldehyde भी अछि uranium अछि 1 2 3 answer is 1 3 then 2 4 5 then 1 3 5 then 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चंस एनीवन समस्त पार्टिसिपेट करि परिबो किया भितर रहइबो ठीक अछि ओके सो आंसर जदि तमे देखिबो इट इज formaldehyde हैला formaldehyde sorbitol अपन इट इज 1 3 5 will come down हैला मु फाइनल करिबो नेक्स्ट समस्त पार्टिसिपेट करो रे नेक्स्ट देखिबो जदि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स 1990 1985 1998 and none of the above किया भितर ठीक अछि ओके सो एटा जदि हमें देखिबा कि फाइनल हैला एटा हमें देखले कि मु एटी sorbitol काटली आउ योर formaldehyde काटली दीटा दिस ऑप्शन सो एटा भी हम डिस्कस करते दीटा तो रहिला कि 1 3 5 आर एक्सप्लेनेशन में देबी आंसर जदि हम देखिबा ताले कि आसी इट इज सी 1 3 5 ओके अच्छा we'll go for the NBB discussions Wildlife Trust India माने WTI वो WTI केबे इतला Trust India it is founded in C 1900 1998 मसिया right it is in the 1998 1998 मसिया इतला देखिबार आंसर टा okay then WTI has grown to be one of the India's premier wildlife NGOs है ना premier wildlife NGOs the principal concerns WTI include की करे it includes crisis management and the provision of quick efficient and individual species or habitats that inquired the most जदि हमें WTI तापर मु एटा क्वेश्चन के बड़ क्वेश्चन तो सेठी पचर नु आगे एटा सार दवा WTI रे बेसिक कोन अछि grown in the India's premier wildlife NGOs basically it is a premier wildlife NGOs the principal concerns WTI कोन तारा principal concern it includes crisis management basically crisis management and the provision of one quick efficient quick efficient and to individual species or habitats that required it the most जहाँ भी जिनस सो एते बड़ गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एटा कवर कर WTI जदि हम देखिबा कि बहुत बड़ जदि देखिबो हमर तार रिस्पांसिबिलिटीज खाली जदि हम स्पीसीज ऊपर देखिबा इंडिविजुअल स्पीसीज और हैबिटेट्स ऊपर अच्छा ता पूर्व आंसर ओके एटा देखले वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऊपर हम गला नेक्स्ट जदि हम देखिबा कि आ भितर मेजर एज अ पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर हमें जो पानी पिउछ ड्रिंकिंग वाटर तुम देखतो बहुत जगह केस तुम सुनुथबो सुकिंदा माइंस एरिया रे आउ बेले बेले तुम देखिबो टमका हैला धर हम एग्जांपल टमका इवन इफ इन धानबाद झरिया बहुत जगह तुम सुनुथबो कि लोक माने ना दे आर इवेंचुअली दे लॉस्ट देयर किडनी लिवर्स एंड हैविंग some stomach liver सब गड़बड़ and in fact sometimes
majorly affected in the by cancer. So यहाँ पे responsible किए जानिबा arsenic बहुत problem it's an also arsenic आउ जदि देखिबो कि uranium माने बहुत they are highly catastrophic, right? In fact the fluoride also content fluoride रे अधिकार हम दांत भांगी गली पड़े हला fluoride रे देखिबा one by one 135 देखले arsenic containing contamination groundwater is significant problem in several states of India. जदि हमें इंडिया को देखिबा माइनिंग स्टेट इंडिया रे माइनिंग्स ऊपर बहुत गुडे स्टेट अछि जदि माइनिंग स्टेट रे जेंति खास करी मुगने भी छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश झारखंड or the mainly Singhbhum province, okay, and even if Bengal, West Bengal maybe, and the if you see the Karnataka and also the parts of your Andhra Pradesh, southern Andhra Pradesh, so maximum your fluorides पे आ जाए several states of India including the West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Assam हैला एमान को मिसई की भी जनरली एटा कोन माने एमान हेले कि जदि तमे देखिबो एमाने प्लेन एरिया कि वेस्ट बेंगल बिहार उत्तर प्रदेश असम एमाने असले गैंजेटिक प्लेन इथि भी तमर इटा देखा जाए कि आर्सेनिक long term exposure of to arsenic कौन हुए arsenic जदि हुए can lead to various health issues such as skin lesions हला cancer and cardiovascular disease heart disease और cancer skin cancer टा mainly हुए जदि if human are exposed to highly to the arsenic. Okay, next fluoride जदि देखिबो fluoride is another common pollutant fluoride is another common pollutant found in drinking water रे fluoride देखा जाए in many parts of India बहुत सारा parts of India रे and particularly in the states like कोटी Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh है Rajasthan, Gujarat और Andhra Pradesh रे while low levels of fluoride are beneficial for the dental health जदि हमें देखिबा कि low level are the dental health excessive fluoride taken to cause dental and skeletal fluorosis जोटा काटे पूर्व में डिस्कस कले excessive जदि fluorine content थाए fluoride content थाए दांत माने mainly हमारी damages our teeth mainly tooth problem टा हुए uranium देखिबा next रे uranium containing your groundwater has been जदि देखिबो कि किछि किछि पार्ट रे इंडिया रे देखा है खास कर जदि मु नेबी उत्तर प्रदेश रो नरोरा आउ एपड जदि देबी हमर काकीनाडा एरिया रे आउ जदि हमें तमिलनाडु रे जदि कल्पकम एरिया रे बहुत जगह देखियो जदि कि uranium रो प्रॉब्लम जो सेठिकार लोकल inhabitants they are highly suffered for this one. Let us know groundwater has been reported some of regions of India since in Punjab, Haryana and Rajasthan exposure to the high levels of uranium जदि हुए high levels of uranium can lead to kidney damage हैला kidney damage करे high level of uranium kidney damage and increase risk of cancer हैला cancer risk को increase करे sorbitol and formaldehyde are not typically found in the pollutants drinking water in India India रे ई पार्ट टा हमर देखा जायनी so please make a remember note of it हैला sorbitol जदि हम देखिबा sorbitol and formaldehyde India रे mainly देखा जायनी but major arsenic fluoride और uranium आ भितर तीनटा जका सबुट देखियो जदि सबुट कैटास्ट्रोफिक हैला arsenic और uranium ठीक अछि then तमरो fluoride आसी आगु बढ़िबा 9 नंबर क्वेश्चन देखो ठीक अछि 15 questions आज हम करिबा stay with me with proper explanation बुझिबा मन रखो these are the very series जो मु हमें आरंभ कले MCQ series हैला MCQ series जदि देखिबो कि these are the very important for your prelims perspective रो definitely prelims रे बहुत सारा clarity रहइबो खाली सुनिले माने जदि तमे मन दे कि सुनिबो किछ किछ लिखि देतो ये रे that is also very helpful okay exam पे देखिबा considering the following pairs कि Norcake biosphere reserve कोठी एटा हला Garo Hills हैला this is Garo Hills then Loktak Lake it is in the Bareil range Loktak हला Bareil range then Namdappa National Park it is in the Dafla Hills या भितरु हैला एटी खाली एटा टिके मझिरे माने रहि जाइछि आई मीन सॉरी एटी जदि देखिबो कि एटी सेग्रीगेशन टा खाली मेठी देली हैला एटा गोटे पार्ट रे एटा आ भितरु कोटा रहइबो Dafla Hills hill ranges हैला एटी मु देखिली बायोस्फीयर रिजर्व लिखिली बायोस्फीयर रिजर्व्स and it hills hills or ranges ए पार्ट रे ठीक अछि तो कोटा हमें देखिबा Norcake biosphere reserve Garo Hills absolutely correct then Loktak गोटे गला वन जोटा देखिबा हमें नामदप्पा जदि देखिबा नामदप्पा कोठी it is in the Arunachal Pradesh Namdappa is in Arunachal Pradesh ठीक अछि and the Loktak and Bareil range 1 and 3 जदि हमें देखिबा कि this is all are correct जदि देखिबा तमे all are correct which of the pairs is are correct हला तो हमें देखिबा कि A B C D भी ऑप्शन भितर will go for the C आंसर देखिबा
oh I am sorry tahle this is Loktak in Namdappa अच्छा जस्ट ए मिस्टेक हला गोटे हेगला देन लोकटाक एंड बारेल जदि हम देखबा कि डिस्कस कर दबा ओके लेट मी चेक आउट कोन नॉकरेक जदि हम देखबा कि बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इन द गारो हिल्स this pair is correctly matched. It is in the Nokrek is located in the Garo Hills of Meghalaya in India. It was designated as the biosphere reserve 2009 2009 रे right 2009 रे तमर रहला कि Nokrek biosphere reserve it was first it was taken as a okay designated as a biosphere reserve हैला Nokrek जोटा कि मेघालय रे अछि this is in the मेघालय Nokrek हला कोठी मेघालय रे एटी लेखिनियो देखो छोटो छोटो सिली मिस्टेक भी केते भूल हिजो नॉर्मल आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि एग्जाम हॉल रे मिस्टेक केमति ले प्रैक्टिकली तबे निजे देखो एटी मोर भी छोट छोट जिंस रे स्लिप हे बिकॉज़ यू हैव टू ऑलवेज सेही जिंस जदी एठी जदी टिके टिके पॉइंट रे टिके स्लिप होच माने भाबो एग्जाम हॉल रे केतेटा ऑब्वियस हबा राइट सो देखो मन दे कि देखो सो इट वाज रेडिड एज द बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009 and known for its कोन पे diverse flora and including the rare red panda ऊपर आगर मु कहथि ना चाइना इज क्लेमिंग कि रेड पांडा जोटा अछि दियो मु इंडिया रे देखि अरे खुद से नहीं होता है तमे निजे निजरो देखो एंड व्हाई यू वरीड अबाउट अस ई पिक्चर थिला माने चाइना हैज हाइलाइटेड दैट द रेड पांडा एक्चुअली तांकर जियांट पांडा बड़ बड़ हमर एटी रेड पांडा कोटा छोटो छोटो कोठी इंडिया रे जोटा देखा होचन and China was asking that India is not taking enough care of these pandas and let us Chinese government should be intervened to take care. Means I mean Chinese your environment department. See such an disgusting statement they are making. खुद से नहीं होता है अपना है ना? So इटा मन रखो. It will be very interesting if you remember all these facts and information. That will definitely help you out. कारण environment questions तुम आगुर को it is very diverse. किसी भी सामने पचार दो चंदी and you cannot ask. है किसी डेट नहीं है सब बेले देखिबो हिंदू न्यूज़ पेपर तमाने किसी ना किसी गोटे रिव्याम करिक से माने पको माने इंडिकेटेड न्यूज़ थिबो ता संगे ओके मासे तले गोटे थिबो 6 मास पर सेही जिंसटा आउटी बढ़ाई कोन करथिबे माने देयर इज एन कंटीन्यूअस चेंजेस राइट सो देखिबो इंक्लूडिंग द रेड पांडा एंड द होलो गिबन इज बेसिकली भी एठी देखा जाय कोठी नॉकरेक पे ठीक अछि नॉकरेक रे देखा जाय होलो गिबन माने गिबन टाइप रो जोटा कि बहुत स्पेसिफिकली इट इज found in the Meghalayas, right? And this it's in this Nokrek biosphere reserve. Again, Loktak जो barrel range देखो this pair incorrectly कहेंगे ना Loktak is in Manipur, India, but it is not associated to any of the mountain ranges. Loktak जोटा कि हमें देखी हुआ Loktak Lake, है ना? देखो very simple. Fumdis हमें को मन रखी था, है ना? Floating lake. Basically it है ना Fumdis or floating lake. अको कौन को चलो Fumdis will normally known as Fumdis or floating lake मन रखो floating lake एको कोवा में है ना floating lake Fumdis or floating lake रे कौन सी mountain ranges में so this pair is incorrect तामन कौन कले this pair is incorrect हमें मान ले this is wrong है ना it's an गोटे माने lake एटा गोटे there is nothing associated with the barrel range next नाम द देखो how you eliminate if you have ample of adequate of information then it is easier for you to eliminate okay नेक्स्ट थर्ड नामदप्पा नेशनल पार्क जोटा कि अछि कोठी अरुणाचल प्रदेश नामदप्पा मन रख नामदप्पा इज इन हला नामदप्पा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश ठीक अछि अरुणाचल प्रदेश रे अरुणाचल प्रदेश अछि नामदप्पा नेशनल पार्क जदि तमे देखिबो इट इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश इंडिया बट इट इज नॉट लोकेटेड इन डाफला हिल्स बेसिकली डाफला कोठी हला आसाम इंस्टेड ऑफ इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस नोन फॉर द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ ठीक अछि Dafla जदि तमे देखिबो it is in Assam right and wildlife including the endangered hollow gibbon में एई पटे देखा जाय कोठी जदि तमे देखिबो नाम था परे hollow gibbon and your tigers हला leopards this Dafla hills are located in the neighboring Assam हला तमे देखबा जदि तमे atlas रे देखिबो जतले तमे एई बडे आगु जो क्लास रहिबो वर्तमान प्रीलिम्स पर्यंत जतले तमे पढिबो सब बडे गोटे atlas नेके पाखरे बसुथबो हला it will help you out to assimilate ठीक है सर जदि कहले डाक्टर गोटी चटकने खोलिक देखियो आउ सुनिबार आउ संगे संग ताको देखिबा भितरे तमरा को मैग्नेट भलिया माइंड रे रहि जाय तमे हजार तापर पछर पडो बेते तमे बेनिफिट अपन जदि लाइफ रे तमे जिंसटा को देखुछ हैला एटा बहुत प्रैक्टिकल आउ साइकोलॉजिकल जिंसटा हम कहूची ठीक अछि ओके आगु बढ़ियो 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कौन देछि
the most important fishing ground of the world रो जति कि most important fishing ground अछि कोडी देखा जाए found in the regions where हैला warm and cold atmospheric currents meet हैला warm and cold atmospheric currents meet, rivers drain out large amounts of fresh water into the sea, warm and cold oceanic currents meet, then direct continental shelf is undulating. देखो एते भूल हबार चांसेस कोडी अछि हमें नॉर्मली कोन जानचंदी wherever there is warm water means cold current and warm current normally कोन वे जेमति फॉर एग्जांपल्स मु कहली कि जदि मु यूएस नोची ओके यूएस रो मु डायग्राम करछि यूएस रो राइट हला नॉर्मली जदि हम देखबा दिस इज फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम एमति गला नॉर्मली एटी हम देखबी हमें कोन जानचंदी गल्फ स्ट्रीम गला ऊपर कोन आछि लैब्राडोरी एटी हला कि वार्म करंट दिस इज योर वार्म करंट डब्ल्यूसी ऊपर आसला कि तमरो लैब्राडोरी करंट आछि एटी समान मीट हले न्यू फाउंडलैंड पाखरे दिस इज योर कोल्ड करंट एटी हला तमरो दिस इज फॉर एग्जांपल्स मु कहली दिस इज योर ग्रैंड बैंक हला ग्रैंड बैंक और मेजर फिशिंग हब गोटे एग्जांपल देली तो आमे जनरल जतले बहुत फास्ट पढू जितेंद्र वेरी गुड जितेंद्र अच्छा जितेंद्र एटी ओके जितेंद्र कहला ए हाउ आर यू जितेंद्र आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग यू ओके अच्छा जदि तुम देखिबो यूएस एटी मुनेली योर नॉर्थ अमेरिका और लेट्स से यू नो नॉर्थ अमेरिका और यूएस मुनेली नॉर्थ अमेरिका रा यूएस कोस्ट पाखरे तो नॉर्मली एटी कोन होची जतले वार्म करंट और कोल्ड करंट मिसुचंदी ग्रैंड बैंक मु कहली तो हठात ना मो माइंड रे कोन अछि अच्छा वार्म और कोल्ड किंतु एटी कोन देचे एटमॉस्फेरिक करंट एटी भूल हे गेला किंतु एटी कोन हबो दीज आर द ओशियनिक करंट दिस इज करेक्ट एटमॉस्फेरिक करंट नो बुझी हला जितेंद्र ओके वेरी गुड एटमॉस्फेरिक नो जितेंद्र एटी कोन कला ठीक कहिला बुझी से ठीक किंतु तर्बर रे भूल हेगा दीज आर कॉल्ड द सिली मिस्टेक प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट समस्त सिली मिस्टेक जितेंद्र एटी सिली मिस्टेक हे गेला एटी दिस इज नॉट द एटमॉस्फेरिक करंट दिस इज योर कोल्ड ओशियनिक करंट कोडी काहे ना एटा अटलांटिक ओशियन रे जाउछन मान ओके सो आंसर कोन रहइबो आंसर इज योर बेसिकली ए नीदर बी नीदर डी आंसर इज योर सी is the correct answer this is the correct answer C is it clear okay good explanation देखिबा the most important fishing grounds of the world found in the where the जनरली देखा जाई छी कि वर्ल्ड रो मेजर फिशिंग बैंक जो थ्रे वार्म करंट और कोल्ड करंट दे ओशियनिक करंट्स कन्वर्ज जेमति मु कहली ग्रैंड बैंक गोटेला ग्रैंड बैंक आ गोटेला डगर बैंक कोठी तमरो डगर बैंक जदि तक मैं देखिबो कि नॉर्वे पाखा पाखी हला नॉर्वे आ ब्रिटिश पाखरे सही जगह रे डगर बैंक बहुत बढ़िया अछि फिशिंग ग्राउंड जापान कोस्ट पाखरे काहे कि क्यूरोसियो आ जदि तमे देखियो कि ओएसओ करंट मिसुचंती कोडी पैसिफिक ओशियन रे डगर बैंक रे सेमति देखियो तमरो इरमिंगर करंट आ एपट रहला तमरो कैनरी करंट सेठी मिसुचंती कैनरी हला कोल्ड करंट इरमिंगर हला तमरो यूरोप रे इरमिंगर हला वार्म करंट हला सो ए जो जगह रे हुए मिसे सही जगह रे तमरो मेनली योर फिशिंग ग्राउंड देखा जे बिकॉज़ वार्म करंट कम विथ इन द जेतले से माने आसोंती तांको संगे से माने कोन करती खाइबा नै के आस्थांती माने द algae phytoplankton तांगे संगे phytoplankton algae from the warm tropical seas which is best food for the fish माने ताको भल पानी खाया पे and also the your conducive temperature for the you know growth of this warm current cold current that is conducive for the fish growth okay आगु देखिबा so warm current ocean current conveys these are the areas of mixing zones of off-filling zone generally कोन off-filling zone एटी थाए regions when warm and cold current meet they create mixing of water that brings nutrients kon kore brings nutrients from the deep ocean surface this eko kon phenomenon off welling mane cold water etlo upur ku ase upur ku hala au se nutrient ni upur ku ase the upwelling of nutrient rich water promotes growth of phytoplankton normally phytoplankton upare bade and also which forms the base of the marine food chain this is the very base and phytoplankton supports a large population of zooplankton phytoplankton पड़े कौन zooplankton बढ़िबे से माने phytoplankton खांती zooplankton वाले small fish खाबे small fish वाले large fish हो so this is the chain right and which is in turn attracts fish and other higher trophic level organisms this is the clear case right okay next देखिबा 11 number देखिबा in the है एटी देखो in the grassland trees do not replace grasses as a part of an ecological succession kon pai authom repeat korchi in the grassland
ट्री एटी तले तमे परीक्षा रे करथु सबले संग संग अंडरलाइनिंग मारियो हला अंडरलाइनिंग कोन कला ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज नंबर 1 okay insects and fungi second limited sunlight and the paucity of nutrients then water limits and fire then D it is your none of the above जदि हमें देखिबा कोन हला do not replace the grasses as a part of an ecological succession right so answer देछि जितेंद्र it is C ठीक अछि do not replace the grasses as a part of ecological grassland रे हला काहे की करेनी because of the water limits and fire मन रखो grassland रे trees माने do not replace the grasses काहे की grassland जंदी फॉर्म को भी स्टेपी फॉर्म को भी सबाना सेठी कोन वे मेनली डोमिनेट ऑफ ग्रासलैंड वे ट्री रिप्लेस करि पारेनी कोन पई बिकॉज ऑफ द वाटर लिमिट्स एंड फायर गरम बहुत माने एक्चुअली टेंपरेचर हाई सो देयर इज अ चांसेस ऑफ योर यू नो द आउटब्रेक ऑफ द फायर and also the water table is very less or the the rainfall is less so that is what the tree replace kari pareni grassland ko ebula question ko bujhiya ko padibo it's very important so answer is your C is the correct answer right next देखियो जदी एठी जदि हमें देखियो वाटर लिमिट्स एंड फायर बुझो भला धर मु नेली सबाना रीजन कोन तमरो एवरेज टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड आल्सो द वाटर स्कैर्सिटी इज देयर ना पानी माटी प्रेसिपिटेशन अधिक होवे रेनफॉल अधिक होवे ना तमरो वाटर टेबल बहुत अधिक थाए सो दैट इज व्हाट द ट्री से जगटा को ग्रासलैंड नै पारे किंतु कोन घास कम पानी माने आई मीन कम पानी रे माने माने जदि तमे देखियो कि यू नो विथ लिमिटेड वाटर सोर्सेस रे भी भलो भाबरे बढ़ी पाए दैट इज व्हाट द एंड इन फैक्ट टेंपरेचर हाई थिले दैट वाज द रीजन परीक्षा हले तरबर ही कला माने निश्चित रूपे भूल ठीक अछि आगु देखियो in grassland tree do not replace the grasses as a part of an ecological succession primarily due to kon by limitations and periodic fires normal तमे देखियो कि सवाना रे अफ्रीकन जदि तमे देखियो यू नो बोस्टवाना और सेपटे यू नो मेजरली फायर कैच करे बहुत जल्दी फायर कैच करे इफ यू सी द यू नो एनिमल प्लैनेट एंड डिस्कवरी तमे देखियो बहुत जल्दी कैच करे फायर ता रीजन हला कि सेठी टेंपरेचर बहुत अधिक था इफ यू सो द कालाहारी डेजर्ट फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द कालाहारी डेजर्ट राइट एडी एग्जांपल नेली कोन है यार एडी तमरो देखो तमर केवल खाली सुनले न माइंड रे गोटे पिक्चर क्लाइड रखियो कोड निकली कालाहारी डेजर्ट वेरी कालाहारी डेजर्ट इन कोठी दैट्स इन बोत्सवाना राइट ठीक अछि बोत्सवाना एंड जदि देखियो कि बोत्सवाना जिम्बाब्वे हला आरी पाखरे अफ्रीका रे कालाहारी डेजर्ट इज इन अफ्रीका मन रखो रीजनल ज्योग्राफी बहुत क्वेश्चन पचारछन डू नॉट टेक इट इजीली राइट water limitations कौन grassland typically occur in the regions where limited water and sporadic rainfall बहुत कम हुए माने बड़े-बड़े sporadic means often माने बहुत limited sporadic which is sufficient for the grasses में sufficient but not enough to support the growth of trees जोटा हम डिस्कस करले actually grasses have shallow root system है ना अगर बहुत shallow deeper न थाए shallow माने ऊपर थाए not too deep shallow means not too deep ठीक अछि not too deep shallow means not too deep right and can efficiently utilize the available moisture while trees require more consistent and abundant water supply and for their growth and survival normally okay periodic fires grassland are often subjected to periodic fires either naturally occurring anthropogenetic grasses have evolved tolerate and to recover quickly from the fires while trees are more susceptible to damage and mortality fires normally जब compare करिबा एटा बहुत important point घास बहुत जल्दी रिकवर करनो निया लागले भी सांग किस दिन परे पुनी उठिबो बट ट्री रिकवर करि पारेनी टुक्स एनफ टाइम फॉर ग्रोथ अगेन रीग्रोथ पाई प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस सेकंड हला 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा ठीक अछि which one of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity तांगर decreasing productivity ପାଇଁ की प्रथमे कोन देला ocean lakes grassland and the mangroves ocean grasslands lakes mangroves grasslands हला mangroves एटी कमाटा बोल दिछ mangroves grassland lakes and oceans mangroves and it takes it lakes and grassland एंको भीतर देछि क्वेश्चन कोन correct sequence of decreasing मन रखो decreasing not increasing decreasing माने कमी जाउछि
प्रोडक्टिविटी किए हेतिबो एनी गेस जितेंद्र एनी गेस मींस आई मीन एनी ट्राई फॉर दिस वन कोन हमें कहि परिबा इकोसिस्टम रे डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी माने तांकर जो प्रोडक्शंस वे माने योर सिस्टम रे हैला मींस आई मीन लेट्स से मुनेली फ्लोरा इकोसिस्टम फ्लोरा रे मींस फ्लोरा योर कम्युनिटी माने प्लांट्स मान कंडली तांका भीतर डिक्रीजिंग माने अधिका की माने फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी करूची कोन हमें करिवा विजय लक्ष्मी आंसर देला सी जितेंद्र सी बाकी विजय लक्ष्मी आउ जितेंद्र देला सी ओके ओके वेरी गुड जदि हमें देखिबा कोन आंसर जदि एक्चुअली देखियो सबुटो अधिका मन रख मैनग्रोव्स हुए मैनग्रोव सबुटो अधिका तो एठी मु कोन नेली एई दिटा केंति परीक्षा हले केंति अप्रोच नबो तमे काटो कोठी ए काटो डी काटो रहिला कि बी आउ सी माने एटा को नेली पुणी बी नेला पर पुणी हमें देखियो ता पर सेकंड ऑप्शन कोन अछि मैनग्रोव पर कि अछि ओशियन ग्रासलैंड और लेक्स एठी तमरो एठी जणा पड़ी गेला एठी भूल हे गेला कोन ओशियन बिल्कुल नो ओशियन पूर्व आसो ग्रासलैंड तो एठी ठीक हे गेला माने ता पर लेक्स और ओशियन भीतर तुम फरक भी देखुछ जानु न बट मन रख मैनग्रोव्स पर सब ग्रासलैंड हो ओशियन केबे भी ग्रासलैंड अधिका हबन ओशियन सबले कम 125 वाला को सी मिनिमम 300 ग्रासलैंड तो एठी भूल हे गेला तो आंसर कोन रहबो एठी हमें बी को एलिमिनेट कर देले तो आंसर रह गेला सी बचिला कि सी आंसर इज योर सी वेरी गुड लेट्स क्लैप फॉर बोथ ऑफ यू ट्रिक रे केमति तमे बाहर करबे जिंसटा राइट जदि ओ तमे लेक्स आउ ओशियंस भितरे तमे माने लेक्स आउ या भितर कंफ्यूजन अच्छो कि आगे पछ लेक्स आउ ओशियन भितरे बट स्टिल ग्रासलैंड आ एठु तमे जानलो कि मैनग्रोव्स परे ग्रासलैंड आ कोठी भी नै एई गोटी अछि ऑप्शन सी मारि दैट मींस विदाउट नोइंग मच तमे अल्प जानि कि भी अधिक ठीक करि परिबो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इन प्रीलिम्स देखिबो आंसर मैनग्रोव्स जदि देखिबो ग्रासलैंड्स एंड सॉरी मैनग्रोव्स ग्रासलैंड जदि देखिबो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द रेट एट व्हिच इट कन्वर्टेड इनटू बायोमास पर यूनिट एरिया हैला जोथरे बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम द करेक्ट सीक्वेंस कोन कोन देखिबो एटी मन रखो बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक अछि mangrove forest are highly productive ecosystem due to their nutrient enriched environment हैला due to their nutrient enriched environment biomass जदि देखिबो high plant biomass called rapid recycling of nutrients basically right they have the net primary productivity किते 2500 हैला gc ठीक अछि your meter per year जदि हमें स्क्वायर मीटर पर ईयर जदि हमें देखिबा एतिकी ग्राम एतिकी देखिबो हैला एतिकी जदि प्रोडक्टिविटी देखिबो तमे हैले बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बायोमास तो एटी केन आसीबो इट इज कैलोरी हैला पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 2500 उतरे असला मैनग्रोव्स रे केते हाई देखो if you come down the grassland they have the high your net primary productivity which is around 600 to 3000 ता लिमिट ता एटी ला के 2500 मिनिमम ये रहला 600 ରୁ 3000 भितर से किंतु 2500 ये 600 को पड़ेला 600 ରୁ 3000 भितर वेरी करे बट एटी एवरेज है 2500 एंड अबव डिपेंडिंग ऑन द climate and the grassland of example in the tropical or temperate जदि tropical रे अछि आ टेम्परेचर अछि ताले वेरी करिवो tropical टिक अधिक टेम्परेचर टिक कम लेक्स देखियो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक्स डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट साइज केते रहला 100 ରୁ 1500 लेक्स ओशियंस केते आसिला वास्ट एरिया रिलेटिवली लो मेट प्रोडक्टिविटी एडी मन रखा कोडी ओशियंस केते पळे आसिला पाका पाकी 125 सो एठी तमे नीचे देखो दिस इज द रीजन एंड दैट इज व्हाई तमर आसिला सेटिंग होप ए एनालिसिस तुमको इजी रहबो एठी आत्र पढी दोछ ओशियंस ऊपर द ओशियंस कवर ए वास्ट एरिया दे हैव ए रिलेटिवली low net primary productivity due to the limited availability of nutrients as many as the region's average oceanic primary productivity 125 your gram calorie meter square meter per year but can be much higher in the coastal and the upwelling zones but there is an exception wherever there is an coastal areas मन रखो and upwelling माने cold water तो upwelling होतो से जगह टिका अधिका हैला मन रखो एटा तमर assessment reasoning भी तुमको हेल्प होबो एई जिंसटा एटिम कोन लिखले higher in the coastal areas I'm sorry higher in the coastal areas and upwelling zones ए जगह रे हैला higher in the coastal areas and upwelling zones ऊपर coastal areas and the upwelling zones ऊपर एटी तमर exception दिखा जाय लेक्स केस रे सेम जिंस
varies greatly depending on the nutrient size, depth. On an average, lakes have primary productivity 8 of 100 to 150. But ocean case रे कोठी मन रखो जो जगह coastal area और जो जगह upwelling वे cold है ना cold current रा upwelling वे सही जगह तुम टिके vary करिवो. Okay, एटा मन रखो ये जिन सॉर्ट. These are the explanation that will definitely help you out. Next question 13. Consider the following fauna of India: ghadial, leatherback, and swamp deer. Man rakha. Ghadial, leatherback, turtle, and swamp deer. Which of the other are endangered? Ki hai mane ka bhitar. Which among the following are the endangered? आ bhitar. ठीक है जी. किया रहिला endangered. घाड़ियाल, लेदरबैक टर्टल हला लेदरबैक टर्टल माने तांकर खोळपाटा लेदर भळिया आइतो लेदरबैक टर्टल and your swamp deer. 1 and 2, 3 only, 1, 2, 3 and none. Yes, Vijay Lakshmi and Jitendra. कोटा भितरु हबो endangered मु कोन देली are endangered. देखा ठीक अछि. आ भितर तुमे आंसर देखिबा it is your घड़ियल भी endangered रे अछि, leatherback turtle भी अछि, swamp deer अछि. So answer जो देखियो एटी all are correct. C is the correct answer. समस्ते आ भितर explanation देखि देबा. Ghadial is critically endangered species. Basically, ghadial is critically endangered species of crocodile found in the rivers in the koti northern in northern India और Nepal देखा जाए. Basically, northern India और Nepal रे the population has declined drastically due to habitat loss. Habitat loss with hunting, habitat loss, hunting, and entanglement in the fishing nets. Entanglement in the fishing nets. The leatherback turtle is largest living turtle species and is classified as vulnerable globally. ठीक है जी leatherback जब हम देखिए. It faces threats such as habitat loss. समस्त देखो प्राय तुम देखियो जो endangered होचन तंकर सब habitat loss समान होचन. Habitat loss, poaching for its eggs and meat, and accidental captures in the fishing gear भी देखा जाए तंकर. In India, leatherback turtle is found in Koti Andaman Nicobar Islands along with the coast of Tamil Nadu. यही दीटा जगह रे मन रखल. एटा भी गुड क्वेश्चन यही परियो. अंडमान निकोबर आइलैंड्स आउ तमिलनाडु रे देखा जाए. कोठी लेदरबैक टर्टल समस्तंकर प्राय देखो कॉमन गोटे से माने हैबिटेट लॉस ऑफ पोचिंग. पोचिंग मींस किलिंग ऑफ द एनिमल्स. पोचिंग मींस योर किलिंग. हला पोचिंग रो सिनोनिम्स हला इट इज योर किलिंग. Again, the swamp deer is also known as barasingha. एमन को barasingha भी कहा जाए. And the swamp deer is a vulnerable species found in the Indian subcontinent. Basically, in the Indian subcontinent, swamp deer देखा जाए. It inhabits wetlands and grassland. Basically, inhabits currently wetland, grassland. Its population has declined due to the habitat loss. Again, habitat loss, poaching, माने hunting, and competition with the livestock. हला बारासिंगा जोटा की vulnerable also found in the Indian subcontinent. बारासिंगा बहुत common. बारासिंगा बहुत माने देखियो जदि तमे ए जो बारासिंगा देखियो maximum ए जो swamp deer टा maximum देखियो तमरो हिली स्टेट्स हो कि हिमालयन स्टेट्स हो बहुत अधिक लोक माने डियर मीट बहुत माने यू नो टेस्टी बोली तमने माने ताको शिकार करन माने हाउ क्रूएल. ओके माने इनफैक्ट दे डोंट लिव आउट दिस वन. इनफैक्ट देयर इज एन एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द अदर बाहर लोक केमति तमे मारी परियो ताले डीएस वन. बट इट इज ऑल हला आज का डेट तो करप्शन सबुठी हेगरानी माने हला. ओके नेक्स्ट corruption is obvious but don't kill the animal. That is what the major thing. Okay, very good. समझ दल. एट दीटा लास्ट टू क्वेश्चंस हमें डिस्कस करबा एटा इना को. बांदीपुर नेशनल पार्क is located in which of the following state? कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु. की आंसर दे परियो? बांदीपुर नेशनल पार्क. यस जितेंद्र विजयलक्ष्मी. बांदीपुर नेशनल पार्क कोडी दिबो? कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु. Who will give the answer? बांदीपुर नेशनल पार्क. Where is it? बांदीपुर is कोटी. को जगह रे बांदीपुर नेशनल पार्क अछि. जितेंद्र आंसर दला ए. यस विजयलक्ष्मी. Where is it? बांदीपुर नेशनल पार्क कोटी. ओके जदि मैं आंसर देखिबा इट इज नीदर इन तमिलनाडु, नीदर झारखंड, नीदर ओडिशा. आंसर इज योर कर्नाटका. ए कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. ए सब जंक बोल हला.
इट इज इन कर्नाटक बांदीपुर नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क रे वेरी गुड है बांदीपुर नेशनल पार्क जब तुम देखो ये भी तुम डियर अच्छा इनफैक्ट बांदीपुर रे मैक्सिमम एलिफेंट बोथ इज वेरी गुड है आई वाज विजिटेड दैट वन ठीक है बहुत सुंदर जगह बांदीपुर नेशनल पार्क नेक्स्ट देखिबा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट विल डिस्कस डिटेल कहबी was held at which of the following places? London, Stockholm, Montreal and Los Angeles. Yes. Jitendra ये कोड हेटा United Nations Conference on the Human Environment was held in which of the following state? London, Stockholm, Montreal, Los Angeles. की कहि परियो आंसर दियो. United Nations Conference on Human Environment. हैला on human environment. Yes, anyone can say. Jitendra, you choose the Stockholm. Many other very good. बाकी दो समस्त पार्टिसिपेट करो जब पार्टिसिपेट करिवो डेफिनेटली इट विल वर्क बहुत हेल्पफुल हो समस्त को जगह रेडी करा हुए लंदन स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल एंड लॉस एंजल्स ओके आंसर जदि हम देखिबा यस इट इज नीदर लंदन नॉर मॉन्ट्रियल इन लॉस एंजल्स एटी आंसर हो तमरो बी स्टॉकहोम ठीक अछि स्टॉकहोम टा कोठी ताले वेरी स्टॉकहोम हला कोठी स्टॉकहोम नेदरलैंड रे अच्छा आगु जिबा ए सॉरी स्वीडन आई एम सॉरी इट्स इन स्वीडन है स्टॉकहोम स्वीडन देखिबा इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम वाज स्वीडन रो हला स्वीडन रे स्टॉकहोम ठीक अछि देखि नबो स्वीडन अच्छा Stockholm was the first world conference to make environment a major issue. Stockholm जदि हमें देखिबा the participant adopted a series of principles of sound management of the environment. जदि हमें देखिबा sound management of the environment ऊपर Stockholm 1972 मसिया रे एटा हमें करथिले राइट नेक्स्ट बेसिकली यू नो make environment as a major issue एटा the Stockholm conference जदि देखिबो कि basically Stockholm conference was talked about you know again जदि हमें देखिबा कि यू नो एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस ऊपर नॉर्मली ना मेजर इश्यूज कॉन्फ्रेंस ओके एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड ऊपर योर एजेंडा बेसिकली समान कोनला तो देखिबा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली एंड डील्स विद द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तार पूर्व क्वेश्चन कोनला बांदीपुर यस इट्स स्वीडन ठीक अछि जदि हमें देखिबा कि स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन ठीक अछि स्वीडन रा कैपिटल एटा दिस वन कैपिटल ऑफ स्वीडन बांदीपुर नेशनल पार्क देखो इट्स अ नेशनल पार्क कवरिंग जोटा केतिक एरिया एंड दिस इज कोड एटा बेसिकली इट इज इन द चर्मराज नगर a district in Karnataka Charmaraj Nagar Karnataka रे अछि Charmaraj Nagar it's a very populated okay very beautiful place Charmaraj Nagar district in Charmaraj district हैला in Karnataka it was established as a प्रथम इतला कोन टाइगर रिजर्व बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर अंडर एटा हेतला 1973 मसिया मन रखो बांदीपुर एटा गोटे क्वेश्चन तमर आसीबो बांदीपुर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर रे आस्तिला 1973 मसिया रे हैला एस्टैब्लिश एज ए टाइगर रिजर्व बांदीपुर नेशनल पार्क करला 1973 मसिया रे under the government of India's project tiger right it was a part of Nilgiris biosphere reserve since 1986 Nilgiri biosphere रो गोटे पार्ट एटा 1986 मसिया रे ठीक अछि ओके सो आई होपफुल 15 टा क्वेश्चन भीतर तमे हम जति डिस्कस कर डेफिनेटली गोटे घंटा ला समस्त पेशेंस रे बसी आई एम रियली amazed for all your patience समस्त बसी देखुचो इट इज रियली वंडरफुल हमन रखो 15 टा क्वेश्चन कलो guaranteed तमे 30 टा क्वेश्चन बेनिफिट पाइबो एई भले हम आगु को आउरी प्रिलिम्स वाला बंद डेफिनेटली विल कंटिन्यू दिस सीरीज बट मन रखो पढिला बेले सब लेखुथबो और क्लास रे आउ आ क्लास धरि बसो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल ता पर किछ म अनाउंसमेंट कर दे आज यू नो your geography optional is also going on and I would previously coach both offline and online batches are there for the your UPSC OPSC ditanga pai UPSC offline ta basically online to OPSC it is you know last 6 months it is on the flow okay those who want to join they can connect me also the test series also going on test series also full swing re chalchi hela both offline online and also the GS pai bhi chalchi hela anyone interested they can you know connect to me thank you so much thank you everyone okay thank you so much thank you everyone we'll meet again निश्चित रूपे we'll meet again and जहां भी हम ये सीरीज टाइम में डिस्कस कर ले
right? So definitely next seମିତି geography or environment ଦିଟାଙ୍କ ନେଇକି ଆସିବି, we'll again discuss. Thank you so much. Thank you all of you. We'll meet again. Have a good day. Take care. Bye bye. Thank you so much. Thank you Jitendra. Take care. Thank you so much. Thank you.